last time we had done the session on the screen time, how it affects the eyes. This time we came along with a very important thing which we are facing right now nowadays because of this lockdown. We all are at our home, convinced, and we are doing work from home. So work from home in a one round, it give us the a feeling that you can do the work at home at the convenience of your home, sitting and sipping a coffee and doing the work. But in return of it, it also affect us at all on our health basis also. It going to be increase a lot of back pain, neck pain, cervical pain. The people are not comfortable. It's all having a toll on the mental as well as your physical health. So I'm just going to start with the thing over here. The news of working from home, what a cheers to so many professionals, but as lockdown is unexpected for how prolonged it will be. Work from home has, started hurting many with the back pain and is becoming the new normal. So some of the very scaring facts, which just a research form of it, is there like people from the age group of 16 to 34 years make up 20% of the treatment for the back and neck condition. This age group is 16 to 34. The percentage of the young population going for back treatment is highest in New Delhi. 45% of the people neglect their pain for more than 7 weeks. That result in the, again, a delayed treatment. And treatment rate is lower in women as compared to men. We always think we are the macho, we can handle the situation. It's a pain to hair. Unless something comes out very severe and, something which can't be bearable on the basis of research, then only we go to the doctor, visit to the doctor. Now, pain is something we love to live with it. We never find it out what needs to be done. We just go on for the treatment, which is a temporary basis, putting an ointment or a spray or something like that. So all these reports clearly show that the patients neglect their pain and try other approaches that give temporary relief, and pain usually come back. So now today we have with us Dr. Amit Gire. He is a well-known sports and neuro physiotherapist in Navi Mumbai. And just a small introduction of Dr. Amit Gire. Just one second. Thank you, Shweta, for inviting me on such a wonderful platform. Actually, ये बहुत अच्छा concept है आपका निवेश की पाठशाला. Oh, thank you so much. इसमें एटलीस्ट आप लोगों को ये कर रहे हो, अवेयर कर रहे हो अपने बारे में. जनरली राइट नाउ कोविड के इसमें क्या हो रहा है ना कि मोर पीपल आर इंटरेस्टेड इन द हेल्थ इशू. अपने हेल्थ के बारे में कुछ नया सीखना है, उनको नया पता करना है. दैट विल बी द मोर इंटरेस्टिंग. ये दैट वे यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब. Thank you so much, Doctor. So now, such a good words for us, Nivesh Ki Pathshala. Now, something for you. We have Dr. Gire. He's just one second. He's a director of the Om Physiotherapy Clinic, Navi Mumbai. Graduation from Government Medical College, Nagpur. Post-graduation from Neuroscience from MGR Health University. Fellowship from the Apollo Hospital, Hyderabad. He is a certified manual therapist, dry needling, sports kinesiotapping. Oh, I don't know so many things. And achievements, he is a physiotherapy partner in various marathons across Navi Mumbai and having a long year of experience, 16 years of experience in his field. So just what he is and what his clinic is all about. Just
Shweta, your audio is on mute. Okay. Yeah. Hello, doctors. Shweta, Aarti is unable to join. Yeah. I just make them join. Just send Okay. a Shall we link. start now? Yeah, sure. Shweta, Okay. Yeah. Aarti is unable to join. Okay. I will check it out. Just ask her to log in again because I did admit her. Okay, so shall we start? So this is all about, what we people are facing during this COVID. And not many people had, complained about, they are start living with that, right? I have to just, give one person to keep on admitting it. So now, doctor, my very first question to you, what should be the ideal number of hours for continuous sitting during this lockdown? A big question, lot much work to do from the office, work from home. So what is, according to you, what is the ideal timing? The person should sit continuously. Okay, see, ideal timing is around 45 minutes to 1 hour. Anybody can sit for that much of time. And at a stage, 45 minutes, 1 hour, depend on the age group. Okay, if the patient, if the person is 20 to 40, then he can stretch himself up to 1 hour. And if the person is 40 to 60, then he can stretch up to 45 minutes. But 45 minutes के बाद आपको उठना है, थोड़ा सा take a round, change the posture. For 5 minutes, 10 minutes is okay, sufficient. Then again he can sit for 45 minutes. So इसका benefit क्या होगा? अगर हम every 45 minutes और 1 hour में अगर 5 minutes का या 10 minutes का break लेते हैं, depend on your work schedule or time permits. So that will make you more happier. That will make you more focused and more productive. Otherwise, 1-2 घंटे continue बैठने के बाद, then productivity, concentration level वो सब कम हो जाता है. So it is very important to take a frequent breaks. अगर suppose अगर किसी का monitor उसको बोलता है कि नहीं, you should not leave me, so then what he has to do? Some people are working with the suppose इसमें चल रहा है IT में है या कोई अकाउंटिंग में है, तो they can't leave the screen. तो उसमें हो सकता है कि they can stand at their place without leaving the screen. अपने जगह पे खड़े हो जाओ, 5 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, then again sit down. That will also they get a break, or you can say उनको एक relaxation मिल जाएगा. The posture they are maintaining from 45 minutes or 1 hour, like that. So ideally 45 minutes to 1 hour के बीच में 5 minutes का break लेना चाहिए. Okay. So that means that will really break your change to your muscles to be relaxed, sitting in the normal one posture for a long time. So it really affects in that way. Yeah, muscle become tense, specifically neck, shoulder, upper back के muscles बहुत ज़्यादा tense हो जाते हैं. So to relieve that, you have to take a break. That is very important. During this very, very common question, during this lockdown, what type of patients are coming to you? I know this is very another type of question, asking for how many clients and the patient, but still, because that gives a clarity, what the people are suffering from during this lockdown. Okay, so mainly I have seen frozen shoulder patients, okay, low back pain, neck pain, then wrist pain, numbness in the wrist, and osteoarthritis, knee pain, you can say. This type of cases I'm seeing more nowadays. It might be due to workload on them because there is no maid servant, nothing. कोई काम करने के लिए नहीं है, तो पूरा का पूरा काम और लोड उनके ऊपर आ गया और सडनली लोड आ गया. We are not habitual of doing all these things on a regular basis. So I think this is the reason why I am seeing this type of cases more often in this lockdown. Just before we start, just I ask all the participants, are we audible? Me and doctor, we both are audible. Yes. Okay. Yes, you both are very audible and very, very clear, Shweta and Dr. Gire. Oh, thank you so much. Absolutely clear. Yeah. Because there's no point we keep on discussing among ourselves and no one is going to be able to hear. So better to check. So further on, so if we find it out nowadays, people are suffering more of the frozen shoulder and the cervical pain, osteoporosis, because of the workload, because of the change in the work culture, what we are doing from the long back, because we haven't seen such a scenario in our lives. Yeah. 40 years, we haven't seen, the COVID, this pandemic. So all these things affect us.
nowadays, like what you had said, people complain a lot about the neck pain and the back pain. It should be neglected, because living with the pain is something you are not giving justice to your work. You are not giving your 100% to your work, because somewhere at the back of your mind, आपको वो effect होता है कि कुछ हो रहा है. You're That not will reduce the productivity. That productivity, will reduce the definitely. productivity. So according to you, what suggestion you give? What type of precaution should be taken to avoid it? क्या क्या चीजें करनी चाहिए कि ताकि उसको थोड़ा अवॉइड कर सकें? मेरे हिसाब से first of all you should maintain your posture. Posture is a major role in maintaining and to get you the pain or you are out of the pain. So जैसे कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, suppose if you are working online working चल रहा है, so if you are not maintaining your posture अगर maintain नहीं हो पा रहा है तो क्या होगा? After 1 day, 2 day or 1 week, 1 month, you start getting a neck pain, headache, or shoulder pain, tingling numbness in the hands, or the back pain. You are not able to sit for longer time. Right. So उसमें क्या होगा? It definitely आपका work affect होना शुरू हो जाएगा. Second thing, अगर household wife ये housewife है तो household work करते वक्त they should maintain the posture. जैसा है कि पोछा मार रहे हो तो कैसे पोछा मारना है, और बर्तन मांजना है, क्योंकि अभी तो मांजना ही पड़ता है, तो सिंक ऑलवेज फुल विद द ये अपने वेसल्स एंड ये. तो आपको ऐसा नहीं कि चलो एक बार में पूरा काम खत्म करके मैं बैठ रही हूँ या ये कर रही हूँ, ऐसा नहीं. यू शुड एक उसमें भी ब्रेक्स लेना है. हाफ एन आवर का हो गया काम, टेक अ ब्रेक, रिलैक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट योर वर्क प्रॉपरली, एंड this is how you will maintain your posture and your strength also. So this is something very important. Yes. Next is you have to maintain the stretching of the muscles. The muscles are tight. अगर आप continue काम कर रहे हो तो muscles tight हो रहा है, tight. अगर हम उसको release नहीं करेंगे stretching से, तो tightness develop a pain. एक certain posture पे वो ले जाएगा आपको, ठीक है? So then हम बोलते हैं ना bad posture. So automatically हम bad posture की ओर जाना शुरू करेंगे. क्यों? तो अपने muscles are tight. So every day we should do at least 10 to 15 minutes of stretching. And stretching करने के लिए better option is I think yoga, aerobics, Zumba. These are all the way. और अगर ये सब नहीं कर सकते तो simple stretchings also you can do it at home. It is very easy. Okay. And third is you should maintain the strength. That is also very very important. So how one can maintain the strength? How one can maintain the strength? Because everyone is fit and healthy and strong. So as per their condition, yes. But to increase the strength, there are exercises you can continue. With the strengthening exercise में क्या होता है कि TheraBand exercises है. You can lift the weights, dumbbell exercises है. अब डंबल नहीं है तो you can use the water bottles, filled water bottles, उससे भी आप कर सकते हो. That is also helps in strengthening. And there are power yoga. Power yoga is specifically for the strengthening of the muscles, and normal yoga is for the stretching of the muscles. Okay, the difference is this. One is for the strengthening and one is for stretching. For the stretching. Okay. And there is a number of other techniques also. तो देर वो बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे, बट TheraBands है, देन डंबल्स है, वाटर बॉटल्स यू कैन यूज इट, एंड अदरवाइज अपना बॉडी वेट भी हम यूज कर सकते हैं. बॉडी वेट से भी हम स्ट्रेंथनिंग, जैसे पुशअप्स है, वॉल पुशअप्स है, या नॉर्मल ये, देन लंजेस है, दिस टाइप ऑफ थिंग्स की हम उससे स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं. सो मेन थिंग, मेंटेन द पोस्चर, improve the stretching of the muscles and improve the strength. ये तीन the basic thing. If you maintain that, you will not land up into pains and aches. Right. But because we are so involved in our work, we tend to forget. Our postures slowly and gradually keep on changing, and you just come in a comfort zone, which gives you easy out the things. Comfort like nowadays is always a bad posture. You should never go in comfort, because body is always going to comfort, and comfort is a bad posture. So you need to come back yourself from the comfort. Comfort से बाहर निकल के वापस अपने आप को, you have to tune your mind in that way कि वापस उसी posture में आना है, which is not comfortable. Just like a luxury comes with the cost.
If you go Luxury for the comes with the luxury, cost. Big statement. Luxury comes with the cost. We all do agree. We all do agree. the more Like you when we say, use it, when we have during this lockdown, we have the luxury of doing work from home. So yes, definitely all these things toll up on our health. Like these we are are lying the, down on the sofa or we are lying down on the bed, holding laptop in our hand, different yeah, posture as per our convenience. that is the luxury we are getting at home, That is work the from luxury home, we are getting. And in but effect with the of that, the at the people cost are of reaching pain and all. you. Yeah, people are coming to you. Good. Yes, So three things what you had said: you have to maintain your posture, you have to work on your stretching exercise, you have to work on your strengthening exercise. yes, So these three things we need to work it out. We have to somewhere diligently we have to work on कि ये चीज ऐसे ही करनी है. yes. You know, you have to यही bring back yourself on the same mode. correct. Right. Okay. So one thing, as we're talking about the stitching and the strengthening, as you yourself had said that the workload had increased a lot on the females, right, doctor? Mhm. Yes, a lot. Yes. So you admit means somewhere they need to contribute more in the household works because females are working for the housework also, for their office work also, with the kids also. So the responsibility increased during this lockdown because of कोई helping hand नहीं है. We don't have any mates and all. We are working the work of the 4 people in one go, right? So in general, this is the scenario of today, but in general also we females complained a lot about our leg pain. I'm not talking about the knee pain. I'm talking about the leg pain. कि पैर में बहुत दर्द होता है तो वो एज के साथ होता है या फिर हम लोग कुछ चीज we are missing, we are not doing it properly, because of that it happens. So what is your say on that? Age is not a criteria in the leg pain because I'm seeing a lot of young crowd also with having a leg pain. It's not like कि old लोगों को ही हो रहा. Old लोगों को generally arthritis और ये सब चीजें से होता है. क्या होता है कि when ladies are working, they are working from 24/7 and whole week they are working. It is not like कि Saturday Sunday छुट्टी है तो उनको घर से भी छुट्टी मिल रही है. उल्टा Saturday Sunday उनके ऊपर लोड ज्यादा आ रहा है. They are standing, जैसे मॉर्निंग 5 o'clock उठ रहे हैं तो 10 o'clock तक तो उनको खड़े ही रहना है. कुछ ना कुछ काम चलते रहता है. So they are not taking the break. मैं बोलता हूँ उन लोगों को ब्रेक लो, थोड़ा सा बैठ सकते हो. नहीं, टाइम ही नहीं हमारे पास ब्रेक लेने के लिए. Because we have the number of course back to back. Yes, back to back उनके काम बहुत रहते हैं. कभी बेटे के लिए रहता है, बेटी के लिए रहता है, हस्बैंड्स के लिए रहता है, खुद के लिए रहता है. तो ये सब चीजें होता है. बट उसमें अगर हस्बैंड्स है या अपने बच्चे अगर थोड़ा हेल्प कर दे तो डेफिनेटली वो रिड्यूस हो सकता है. दैट इज ड्यू टू overload due to standing for a long time, not taking rest properly, and their muscle strength is not up to the mark to maintain or to sustain that strain. अगर वो मसल्स में अगर स्ट्रेंथ है आपके पास 2 घंटे काम करने की और आप 4 घंटे खड़े हो तो नेचुरली क्या होगा, बॉडी एक दिन अब्यूज सहन कर लेगी, 2 दिन 3 दिन, 3rd 4th डे पे आपको क्रैम्प्स और स्वेलिंग आना ही है. ठीक है, तो इसीलिए उसमें भी फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेना और स्ट्रेंथनिंग आपको करना ही है. प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग कर रहे हो काफ मसल्स के लिए, और जब आप खड़े रहते हो एक जगह पे तो एटलीस्ट यू शुड वियर ओवर सॉफ्ट फुटवेयर या अपना स्पंज का एक गादी रखो वहां पे नीचे एंड यू स्टैंड ऑन दैट. ठीक है. एंड एक और चीज है, जब किचन में कोई काम कर रहा है तो यू हैव टू सी कि जो प्लेटफॉर्म है वो आपके हाइट के हिसाब से है कि नहीं. अगर आपकी हाइट ज्यादा है, प्लेटफॉर्म की हाइट कम है, तो अगेन देयर इज यू हैव टू बेंड. अगर आपकी हाइट कम है, प्लेटफॉर्म की हाइट ज्यादा है, तो अगेन यू हैव टू रेज योरसेल्फ. तो दीज आर ऑल ऐड इन द स्ट्रेन. तो ये सब चीज आपको कंसिडर करना पड़ेगा. देन अगेन मिसमैच जो हो रहा है, स्ट्रेंथ आपका स्ट्रेंथ 2 hours का है और आप 4 hours के लिए खड़े रहते हो, तो देन दैट आल्सो यू हैव टू रिड्यूस एंड मेंटेन. But nowadays the work culture is like that. We as a female, we have to somewhere we have to stand up. सारे काम खड़े होके ही हैं. Either we are chopping, either we are cleaning, either we are mopping, because the new technology mop are there available in the market, so no one want to turn down and mop the floor in that way. Earlier we were not doing because the maid was there, but because now when you are doing it, so how you can bring a change, because the scenario is like that only. So how often we need to take a break from your regular standing position to the sitting position?
हाँ, तो मैं अपने पेशेंट्स को एडवाइस करता हूँ कि जो बार स्टूल होते हैं ना, बार स्टूल्स, बार में जो स्टूल लगे हुए Bar रहते हैं, stools, right? बार स्टूल्स, तो उसकी हाइट हम एडजस्ट कर सकते हैं. यू गेट अ फुट रेस्ट ऑन दैट. सो आप आराम से उसके हिसाब से अपनी हाइट, अपने स्टूल की हाइट ऊपर नीचे कर सकते हैं. बैठो उसके ऊपर, बैठ के काम क्या करो ना, जो आप खड़े होकर कर सकते हो बैठ के भी कर सकते हो. ऐसा तो नहीं कि खड़े होके बहुत अच्छे से हो जाएगा एंड सिटिंग में नहीं होगा. सो इफ यू डू इट, अगर 2 घंटे का काम है, 2 घंटे आप बैठ रहे हो, 2 घंटे खड़े हो रहे हो, तो हो गया, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. वहाँ पे मसल्स को रिकवरी के लिए टाइम मिल रहा है आपको. तो That means it's very important to break the posture. If you're yes, standing, sit. If you're sitting, rest is stand. important. Rest So is that is important. rest is important. So Yes. any duration, like people love to rest for 3, 3, No, 4, no, 4 no. hours. Not like that. A break of 10 minutes is good enough. At least 5 minutes also is going to solve their problem. अगर वो follow करते हैं तो 50% उनका problem solve हो जाता है. Okay, that means you are saying कि once you are in the kitchen, see the height of the platform. Yes. Have the chair in the chair or the stool in the Stool. kitchen, which help you Yes. out. Have the soft slippers in the Soft kitchen sleeper. whenever you are in the home. That gives a sponge and the things for your foot to get relaxed. That will relieve the pressure. And relieve the pressure, and to have a break of Yeah, at least 5 to break is 10 important. minutes in between your course. So that will help Next. you out. And above all, strengthen your leg, Calf muscles. Yes. calf muscles. So, okay. Again, a very important, a good one. Like we female, we love to wear the footwears. Right, all the hills on all the platforms, and with the saris different, with the jeans different, with the skirts different, and then we complain about the heel pain. So do they have the connection, or it is just like our legs are not strong enough to hold the weight, Not right? No. So it's depend on your foot type, which type of Foot type. foot you have. Okay. Okay. There are 3 type of foots. फुट वी कैन हम उसको आर्चेस के हिसाब से काउंट करते हैं. एक हाई आर्च होता है जिसमें कि आर्चेस बहुत हाईली डेवलप होते हैं, इट्स कॉल्ड हाई आर्च फुट. सेकंड इज फ्लैट फुट जिसमें आर्चेस ही डेवलप नहीं होते. एंड थर्ड इज नॉर्मल फुट. ठीक है. अगर हाई आर्च वाला अगर फ्लैट चप्पल्स पहनेगा या फुटवेयर पहनेगा तो क्या होगा कि उसके आर्चेस पे बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा. अगर फ्लैट फुट वाला अगर हाई हील पहन लेगा तो देन इट विल क्रिएट अ प्रेशर ऑन हिज आर्चेस, क्योंकि उससे आर्चेस उतने स्ट्रेच ही नहीं होंगे. तो अगर हील वाला पहन लेंगे तो बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा उसके ऊपर. एंड देन अगेन इन बोथ द कंडीशन दे विल लैंड अप इनटू अ सोर फुट और swollen फुट और लिगामेंट इंजरी, समथिंग लाइक दैट. ठीक है. एंड बेसिकली हमको पता करना है कि हमारा टाइप ऑफ फुट कौन सा है. एंड टाइप ऑफ फुट पता करने के लिए यू हैव टू कम टू मी और पोडियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा. एंड पोडियाट्रिस्ट इज नॉट इन इंडिया. Okay. इंडिया में नहीं, वो यूएस में मिलेगा, तो आपको यूएस टूर करना पड़ेगा उसके लिए. Okay. तो उसके आपके पास ही आते हैं. सो उसमें अगर ये पता चला तो देन नॉर्मली क्या होता है ना, प्लेटफॉर्म हील यू कैन बियर. प्लेटफॉर्म है. Okay. हाँ, प्लेटफॉर्म हील एंड विद अ सॉफ्ट कुशन होना चाहिए उसको. सॉफ्ट कुशन होने से क्या है कि जो प्रेशर आ रहा है, इफ यू आर स्टैंडिंग फॉर 1 आवर 2 आवर या पूरा दिन आप बाहर घूम रहे हो, तो प्रेशर रिलीज होने के लिए सॉफ्ट फुटवेयर होनी चाहिए. अगर हम फ्लैट पहनते हैं तो फ्लैट में वो सॉफ्टनेस नहीं रहती, बहुत हार्ड होता है. एंड आफ्टर दैट यू स्टार्ट फीलिंग हील पेन. एंड दैट टू अगर लॉन्गर रन में देखोगे तो बहुत लोगों को कैल्केनियस स्पर होता है, जो बोन बढ़ती है ना हील में, हाँ. इट इज ड्यू टू रॉन्ग फुटवेयर. हम फुटवेयर बराबर नहीं पहनते एंड दैट इट्स माइक्रो ट्रॉमा होते रहता है रिपीटेडली ओवर अ पीरियड ऑफ 1 month 2 months years 1 year 2 years. एंड देन ग्रेजुअली इफ यू सी कि मेरा हील पेन तो कंटिन्यू बन रहा है, तो देन एक्सरे निकालने के बाद पता चलता है कि वहां पे कैल्शियम डिपॉजिट हो चुका है एंड इट बिकम अ स्पर. थॉर्न जैसा दिखता है वो हील. Right. वो it becomes very painful. या इट इज वेरी पेनफुल एंड इट इज इरिवर्सिबल once it It is forms. irreversible. Yes. Okay. So sometimes, doctor, we suffer the moment you get up in the morning and you keep your feet down. So it's something, killing. You can't keep your feet down. So what is the reason behind that? क्यों होता है and how we can avoid? Just before you answer this question, this is a request for all the participants. If you have any query, anything you want to ask, please you can chat me up or you can unmute yourself and can raise your hand. So you can ask the doctor. So we're talking about, when the very first thing, get up in the morning, up pair rakhte ho, and it was, very much killing. It's so painful.
So it is because of some any specific reason, or we haven't There tested are, it properly? there are few reasons. Like first is I said calcaneus spur वो develop हो चुका रहता है, तो whenever you wear a hard or you walk on a hard surface for 1 week or 10 days, then वो activate होता है, वहाँ पे inflammation होता है, and then whenever you are on the rest वो inflammation बढ़ता है. तो जैसे ही उसके बाद या तो आप सुबह उठ के नहीं, इवन आप 1 घंटा बैठो फिर खड़े हो जाओ तो then you will get the pain because वहाँ पे swelling आती है. The same way plantar fasciitis बोलते हैं उसको. सेकंड कंडीशन इज plantar fasciitis, यानी एक लिगामेंट होता है अपने आर्चेस में, मिडियल आर्च में एक लिगामेंट होता है, उस पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ गया. जैसे हाई आर्च वाले ने अगर फ्लैट फुट पहन लिया, फ्लैट चप्पल पहन ली, तो क्या होगा कि उसके लिगामेंट पे प्रेशर आएगा एंड वो इन्फ्लेम्ड होता है. In that condition also you will get a morning stiffness, morning pain, or if you sit for longer time and then get up, you will get this type of pain. थर्ड इज बर्साइटिस. वहां पे बर्सा होता है. बर्सा यानी कुशन होते हैं जो टेंडन और बोन्स के बीच में कुशंस होते हैं टू अवॉइड द फ्रिक्शन. ठीक है, अगर उसमें भी इन्फ्लेमेशन हो गया तो अगेन यू विल गेट द सेम टाइप ऑफ थिंग्स. तो सिंपल है, आप सॉफ्ट फुटवेयर यूज करो. सी पहले के आप बोलते थे पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, पहले के जमाने में ऐसा नहीं था, पहले के जमाने में ऐसे हार्ड टाइल्स भी नहीं थी. राइट. जमीन ये था अपना, you can say you are being more grounded and वो ground, आपके पैर के हिसाब से you just adjust according to that. It is not that smooth. Like okay. There is one more in the chat. I'm getting the query over here. My auntie is facing problem of knee pain. She is 53. She has arthritis. Problem in sitting and walking at times. She had a lot of bone pain. So arthritis में होता है कि, and what's her age? 53. 53. Right. 53 ये 53 जो एज है उसमें बहुत ज्यादा आर्थराइटिस डेवलप नहीं होता. इट इज हार्डली रीच अप टू लेवल 2, ग्रेड 2 आर्थराइटिस होता है. तो उसमें कैसा है कि यू हैव टू मेंटेन अगेन द स्ट्रेच, मेंटेन द रेंज ऑफ मोशन, नी जॉइंट का रेंज मोशन इंप्रूव करो, प्लस स्ट्रेंथ ऑल्सो इंप्रूव करना है उनको. ठीक है. इफ दे हैव इन्फ्लेमेशन, अगर बहुत एक्यूट पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो देन दे हैव टू रिड्यूस द inflammation by taking some anti-inflammatory medicines initially for 4-5 days, and then do some hot water fermentation, hot applications you can apply that will reduce the pain, and then gradually start with the exercises. अगर ये एक्सरसाइज करेंगे तो धीरे धीरे वो कम हो जाता है. एक बार कम हो गया उसके बाद she can do anything. There is no restriction like sitting on the ground नहीं करना है, cross leg नहीं करना है, ये सब नहीं करना है till the age of 60. and grade 1 or 2 आर्थराइटिस में बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं लेना है. हाँ, फ्यू एक्टिविटीज है जैसे इंडियन टॉयलेट पोजीशन है जिसमें कि वो ट्रिगर होता है वियर एंड टियर, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है बोन में, तो वो अवॉइड करो. बट बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू मेंटेन योर रेंज ऑफ मोशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत बार ऑर्थोपेडिक बोलते हैं कि ये नहीं करना है. बस जैसे नी पेन आ गया एट द एज ऑफ 40 ऑल्सो वो बोलते नहीं बैठना ही नहीं, नीचे नहीं बैठो, ये मत करो, वो मत करो, एंड देन यू लैंड अप इनटू अ स्टिफ नी. राइट. ठीक है. एंड दैट इज वेयर वो प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू होता है. सो नेवर एवर स्टॉप योर ये एक्सरसाइजेस एंड रेंज ऑफ मोशन, मेंटेन द स्ट्रेंथ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So just now as we were talking about the knee pain only, we say कि अभी तो एज हो गई है और ये घुटने की प्रॉब्लम आएगी, नी की प्रॉब्लम आएगी. So what specific thing कि आती क्यों है, what is the reason behind it, और how we can push it back कि थोड़े टाइम तक नहीं आए, so that we will still be young and keep on running and enjoying the life till the time the knee problem is not there. So what can be done for that? नहीं आया, it is called prevention is better than cure, एक word बोलते हैं ना. But I have seen hardly 1 to 2% people are coming for prevention. Still 99-98% people are waiting for knee pain come, and then they will start searching for the therapies or the treatment. क्या मैं करूँ क्या नहीं करूँ, ये सब होता है. So better when they know that उनके यहाँ पे problem है, parents को problem है, तो they start at the as early as possible. 25-30 से start करो. कुछ नहीं करना है, सिंपल उनको रेंज ऑफ मोशन मेंटेन करना है, स्ट्रेंथ मेंटेन करना है. डाइट में जैसे मल्टीविटामिन्स है, देन मिनरल्स है, ये सब का भी बहुत ये इम्पोर्टेंट रोल. अगर ये सब ये करते रहेंगे तो वो डेवलप होता ही नहीं है. प्रॉपर फुटवेयर,
अगर आपकी फुटवेयर बराबर नहीं है तो अगेन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम इन योर नी. हाँ, 80% factors we can control, 20% factor we can't control. 20% is like a genetics. How is your body structure? How is your genes? How is your wear and tear pattern in your body? वो 20% है, but 80% तो अपने हाथ में है. अगर हम वो कंट्रोल कर सकते हो, that is far far better. Okay. That More, means more active. more active. Because nowadays the young generation, whoever is getting their job, so their timing is so, in a way, they didn't get a time to rest. So whatever time left to them, they want to really enjoy their life. So and the culture, the living culture is the lifestyle had taken in this way. So you are saying from 20 to 30, that means we have to make our kids aware that being physical Yes. active is very important if you want to sustain So that for the longer period at of the time. at the age of 25, 30, they can start with the Zumba and any sports activity. So that means we have to push them to be physical active Yes, in physically fit whatever you do. activity कुछ ना कुछ कर. Otherwise, they will definitely end up into a problem. Even lifestyle diseases जो बोलते हैं, just diabetes and blood pressure. Now I can see it Yes. with very early stages. 30 age में भी Yes. start कर रहे हैं diabetes and blood pressure. Okay. So there you can take control. So from there we can control with your physical active, you can control your weight. So definitely the weight will not come much on the knees. That is also the one reason your knee will be healthy. Strengthen your knee, physical activity and right diet. So all this thing will help you out to be more active throughout your life. And we don't have a knee pain. Okay. But for us, those who haven't done. Okay, so अभी कैसा होता है कि even grade 2, grade 3 arthritis में if और डॉक्टर लोग बोलते हैं कि keep on walking. बट वॉकिंग कैसे करेंगे? देन जब वो वॉक करते हैं तो उनको नी पेन आता है. देन फिर वो ये होते हैं डिस्करेज होते हैं कि क्या वॉकिंग करूं या क्या करूं. वॉकिंग कर रहा हूं, वॉकिंग पेन करेंगे तो वेट कम नहीं होता. हाँ, so that और is वो the पेन हो रहा severe है issue. तो वेट क्या. तो ये सब रिलेटेड है. सो इन दैट सिनेरियो द स्विमिंग एंड हाइड्रोथेरेपी इज फार फार बेटर. स्विमिंग which is the most neglected activity in India. Right. उसके लिए स्विमिंग पूल ढूंढना पड़ता है पहले. Where the swimming pool and then you register yourself as first and above and all you have to learn swimming. Yes. The person So having the water phobia. नहीं, अगर स्विमिंग नहीं भी सीखा तो what you have to do, you have to keep on walking in the pool. You have to do the exercise. What exercise you are going to do on the ground, you can do it on the pool because in pool your body weight is 1/4. So your joint is offload. 1/4 ही weight आ रहा है तुम्हारे joint पे तो वो joint inflame नहीं होगा. ठीक है? That is the best way. Swimming नहीं आ रही है, बस half an hour to 45 minutes you be in the swimming pool. Okay. Either walk करो, खेलो, कूदो, कुछ भी करो, exercise करो, कुछ नहीं होगा वहाँ पे. And even Be in the pool. resistance, yes, even if you are walking, you will get the resistance. It will increase the strength of the muscles. Once you improve the strength up to certain level, then you can come on the ground for the activities. In that condition, it will not hurt your knees. And second activity is cycling. So cycling is also very good. That will also not create too much of pressure on the knees. It will improve the strength. लोगों को लगता है कि साइकिलिंग करने से बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा नी पे प्रेशर नहीं आएगा, मसल्स पे प्रेशर आएगा. मसल्स स्ट्रेंथन होना शुरू होती है उसमें. Okay. नी पे प्रेशर कब आता है? व्हेन यू डू द ग्राउंड एक्टिविटीज, तब नी पे प्रेशर आता है. एग्जैक्टली. साइकिलिंग एंड स्विमिंग में नहीं आता. So these two activities. Very good information. At least we didn't know. We know that by walking only we can reduce the weight. But for the reducing the weight, we have to strengthen our knees first, and we can do by swimming or by cycling. Yes. So girls and the participants gear up for buy the cycle and with just such a swimming pool to start, strengthening your knees. Yeah. Doctor, we had a question over here. Does climbing the staircase, if the person who is staying in a building where we don't have the lift, 2 floor, 3 floor, they have to, climb it up and come down. Does it aggravate the knee pain? Depend. If they recently shift into that house, then it will aggravate definitely. अगर वो काफी सालों से वहाँ रह रहे हैं, उनका every day they have to climb up and down for many times, at least 7-8 times a day. So then they are habitual of that. ठीक है, उनके muscles are tone up for that activity. So only thing, inflammation हुआ है, वो subside करो. Use the proper kneecaps for certain time frame, जैसा 2 weeks, 3 weeks, 1 month के लिए kneecap use करो. Okay. And then थोड़ा सा एक्टिविटी रिड्यूस करो. आप 8-10 बार ऊपर नीचे कर रहे हो तो 2-3 बार ही करो.
जब तक पेन कम नहीं होता, एक बार पेन कम हो गया देन अगेन यू कैन स्टार्ट, नो प्रॉब्लम. Okay. There is one more question. I will just come to on this question, but before that, as I talked about, about the thing. Normally we get confused when to use the ice pack and when to use the hot water treatment. वेरी ये वेरी समझ ही नहीं आता है. बहुत हाँ, कॉमन so where we have to put the ice pack, वहाँ पे हम hot water treatment बैग दे रहे होते हैं बच्चों को या अपने को या whatever the person is suffering from. So how to find it out when to use what? सिंपल है कि जहाँ पे टेम्परेचर रेज है वहाँ पे आइस लगाना. Temperature raise ice. टेम्परेचर, Okay. हाँ, टेम्परेचर रेज सर्टेन एरिया जैसे जॉइंट है या मसल्स है, अगर वहाँ पे टेम्परेचर रेज हो, यू हैव टू टच एंड सी एंड सराउंड. उसके बाजू एडजेसेंट सरफेस को भी टच करो. इफ इट इज हॉट देन इट इज इन्फ्लेम्ड, देन यू हैव टू अप्लाई द आइस. एंड जनरली स्ट्रेन है, स्प्रेन है, स्पोर्ट्स एक्टिव इंजुरीज है, चलते जैसे पैर में मोच आ गई है, नस चढ़ गई है, तो उसमें आपको आईसी यूज करना है बिकॉज इट विल रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन में टेम्परेचर रेज होता है. अगर उसमें हम अगर हॉट वाटर देंगे तो यू विल अगेन एग्रीवेट द इन्फ्लेमेशन. सो इन दैट कंडीशन यू हैव टू अप्लाई द आइस. एंड डीजनरेटिव कंडीशन जैसे आर्थराइटिस है, स्पॉन्डिलाइटिस है, फ्रोजन शोल्डर है, एनी डीजनरेटिव कंडीशंस यानी जिसमें पेन इंटेंसिटी कम रहती है बट प्रोलॉन्ग होती है और एज के हिसाब से आती है, तो देयर यू हैव टू अप्लाई द हॉट वाटर. यस. Okay, so clear definition. जहाँ पे गर्म है वहाँ ठंडा यूज करना है. यस. बट And एक और कंडीशन है कि रूमेटिज्म है, रूमेटिक आर्थराइटिस में जॉइंट इन्फ्लेम्ड होते हैं. बट Rheumatic arthritis में. हाँ, Okay. रूमेटिक जो संधिवात बोलते हैं, संधिवात, Could multiple you please joint could you please arthritis. explain a bit on the what the difference between arthritis and the rheumatic arthritis? वो भी बहुत ही technical terms, so we are not aware of. संधिवात जो बोलते हैं ना, संधिवात जिसमें मल्टीपल जॉइंट अफेक्ट होते हैं, रूमेटिक, तो उसमें ब्लड में एक अपने फैक्टर होता है दैट इज कॉल्ड आरएच, रूमेटिक फैक्टर बोलते हैं. वो पॉजिटिव होता है. यस. तो वो पॉजिटिव होता है उसके अंदर. सो दैट इज ऑटो इम्यून होता है. अपने बॉडी में ही रहने से वो आर्थराइटिस आता है. आप कुछ भी कर लो, वो आर्थराइटिस आपको परेशान करेगा. उसको वो ट्रिगर हो गया तो आपको परेशान करेगा. वो अगर सेटल डाउन है तब तक आपको कुछ नहीं करेगा. ठीक है. बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ नहीं करना, आपको मेंटेन तो करना है अपने जॉइंट मसल वगैरह सब प्रॉपर्ली मेंटेन करते रहना है, तो आपको अफेक्ट नहीं करेगा. अगर आपने देखा होगा उंगलियां टेढ़ी होती है, बहुत लोगों की उंगलियां टेढ़ी होती है ना, दैट इज कॉल्ड रूमेटिक आर्थराइटिस. और नॉर्मल ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कोई भी एक जॉइंट अफेक्ट होगा आपकी बॉडी में, आइदर नी जॉइंट होगा, हिप जॉइंट होगा या शोल्डर जॉइंट होगा. जनरली इसमें वेट बेयरिंग जॉइंट ज्यादा अफेक्ट होते हैं, जहाँ पे वजन ज्यादा आता है वो एरिया अफेक्ट होता है. और रूमेटिज्म में कोई भी जॉइंट अफेक्ट हो सकता है, दैट इज इनसाइड द ब्लड. वो हम पता कर सकते हैं कि इसको रूमेटिज्म है या नहीं है बाय टेकिंग अ सिंपल ब्लड टेस्ट. So फिर वो वहाँ पे डेफिनेशन आती है कि rheumatic में you were telling कि what type of we have to take ice pack or the hot water? Hot water. Rheumatic में hot water. Otherwise in the other arthritis? Other arthritis also hot water. Hot water. हाँ. Okay. Doctor, I had one. Yes. हाँ. So there's one more question. Varicose veins, pain patches, and swelling of nerves in legs. And in the legs, the 29-year-old on heavy side with other health issues as like thyroid, PCOS. So what the suggestion you suggest for? Varicose vein के लिए. Yes. Varicose vein is again वही जो लेडीज लोगों का जो प्रॉब्लम होता है कि आप बोलते हो कि लॉन्ग स्टैंडिंग आप अवॉइड नहीं कर रहे हो, लॉन्ग स्टैंडिंग में ब्रेक्स नहीं ले रहे हो, यू आर अब्यूजिंग योर बॉडी. तो क्या होता है कि मसल्स बिकम सो टाइट कि वो अपने जो वेन्स रहती है उस पे वॉल्स खराब हो जाते हैं, तो ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं हो सकता है. तो उसमें अपने ब्लड वेसल्स में वॉल्स होते हैं जो एक बार पंप करने के बाद ब्लड वापस नीचे नहीं आना चाहिए, इसलिए वॉल्स होते हैं नीचे नहीं आने चाहिए. बट वो प्रेशर इतना ज्यादा होता है टाइटनेस की वजह से वो वॉल खराब होता है. एंड देन you can see that thick veins on the legs or calf muscles. That is called varicose vein. तो उसके लिए आपको स्टॉकिंग्स यूज करना है. उसके लिए दो ये है, आइदर कंजर्वेटिव और सर्जिकल. सर्जिकल में एक लेजर ट्रीटमेंट होता है.
ठीक है, लेजर ट्रीटमेंट में वापस रिलैप्स होने के चांसेस होते हैं, और कंजर्वेटिव में होता है कि यू हैव टू यूज द क्लास 3 क्लास 4 स्टॉकिंग्स होते हैं, वो यूज करो आप, एंड अपना एक्टिविटी और लाइफस्टाइल थोड़ा मॉडिफाई करो अकॉर्डिंग टू द ये पेन एंड, Straight. हाँ. तो ये करके तो ये सॉल्व हो जाता है प्रॉब्लम। Right. So I hope you will get the answer. One more question. I have pain in my left shoulder. It had started last year during pull-up training with the physiotherapy. With the pull-up training, with the physiotherapy, it is reduced, but it's still there. My age is 50. What to do? उसमें है कि प्रॉपर असेसमेंट होना चाहिए कि वेदर इट इज शोल्डर पेन में लिगामेंट इंजरी हुई है, मसल इंजरी हुई है, या इट्स अ बायोमैकेनिकल प्रॉब्लम। बायोमैकेनिक्स ऑफ द जॉइंट भी अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है तो देन यू टेंड टू गेट अ पेन। माइल्ड पेन रहता है बट यू टेंड टू गेट द पेन। सो in spite of doing physiotherapy or exercises, everything, still pain persists. So we have to see for the biomechanics. अगर biomechanics alter हो गया तो then we have to correct the biomechanics. एक बार biomechanics correct हो गया तो then problem solve होता है। तो उसके लिए assessment करना पड़ता है। तो keep on doing the exercises for longer duration, जैसे 6 महीने साल भर तक वो exercises करते रहो, and heavy weight नहीं उठाना है। That is a thumb rule. जब तक पेन जाता नहीं है, don't go for heavy weight, or whichever the activity is aggravating your pain or you are getting the pain, just avoid that. Okay. Shivam ji, I hope you are getting your answer. Next question is, why do we get cramps? Is it some deficiency or because Yes. of First reason for the cramp is vitamin D deficiency. vitamin D? Yes. Second is vitamin E deficiency. Then calcium Okay. deficiency, less of water intake. Okay. So, and you frequent urination, excess of the sweating. Okay. ये सब रीजन होते हैं। मसल वीकनेस, मसल अगर वीक है, अगेन द 2 आवर्स का स्ट्रेंथ है, 6 आवर्स 4 आवर्स का काम कर रहे हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट द क्रैम्प इन द नाइट व्हाइल स्लीपिंग। Okay. ठीक है, सो हाइड्रेट प्रॉपर्ली, Have a lot of हाइड्रेशन आपका water. होना चाहिए। देन Okay. विटामिन डी सप्लीमेंट्स लो, कैल्शियम लो, विटामिन ई लो। जब भी आपको क्रैम्प्स आते हैं, विटामिन ई का कोर्स 10 दिन का खत्म करो। Vitamin That E. will be Any best. tablet or Hydration. any specific tablet you suggest over here? विटामिन ई का एक ही एवियन है। यू कैन Evion. आस्क फॉर द एनी मेडिकल, या लोग खाते कम है, फेस पे ज्यादा लगाते हैं उसको। Yeah, ग्रीन very कलर की true. टैबलेट। For the hair and for the skin, it's very Yes, good. yes. But you know, because we are not aware about whether we can pop it like that or not. या ले सकते हैं। 10 days कुछ नहीं Liver करते हैं। cord oil, the C1, that Liver. one we remember in the childhood, parents used to give. But which one to take? So no तो clarity childhood on में that. नहीं लेना चाहिए, मिड एज में ज्यादा लेना चाहिए कॉड लिवर ऑयल। Cod liver oil. So that is a vitamin E. That is a supplement. Yes, yes, yes. So whenever you have the muscular cramp, you can go for vitamin E. And as Yes. usual, in general, vitamin D you suggest. Yeah, vitamin D is also plays a crucial role in our bone structure. अगर vitamin Okay. D proper है तो bone structures better रहेंगे, otherwise you will tend to get the muscle pain, joint pain Okay. due to vitamin D deficiency. And also it will help in maintaining your resistance power of the body, and your kidney function a lot. Even your if you have a constipation, if you are taking a proper vitamin D, that is also going to help a lot. Vitamin D only not help you to maintain the bone strength, overall your resistance, overall your strength will improve. A lot of जैसे cardiovascular functions है, respiratory functions है, then अपना gut movements है, वो सब भी improve करता है vitamin D. So that is very important. We should frequently take it if you are not exposing to a sunlight. Sunlight. That means very first thing, we should have a sunlight. Basically, we should go and walk in the Yes, sunlight to but- get the vitamin D properly, to make your body function properly, absorb sunlight. If it is not, then you have to go for and to take the supplement of vitamin D. Yes. Right. And you have to hydrate yourself. So that is the one thing to Hydration is very overcome the muscular pain, cramps. Improve the strength. Yes. Now we have the list of question 12. Okay.
I got pain in my right shoulder. This is the thing from Raj. I got pain in my right shoulder. So what I have to do? There is no relief on my right shoulder. What can be done? Age 32. Age 32. What is the reason for the shoulder pain? You have to find out that first. Yes, assessment is very important. If we assess properly, then only I can able to give the answer. Otherwise, in general, apply the again. In general, I will tell apply the hot water. If it is a more than 1 month duration pain, apply the hot water. Maintain try to improve the strength, not strength. Try to improve the range of motion. And if you improve the range of motion, then go for the strengthening gradually. Start with the half kg, then 1 kg dumbbell, then 2 kgs, then resistance band, then gradually improve. Then it is definitely going to improve. But initially, you have to improve your strength, range of motion first, and then go for the strengthening. If it doesn't subside, then we have to assess in detail what is the exact reason for that. What is the There reason? are n number of reasons for that. Might be muscle injury, ligament injury, bursitis, tendinitis, adhesive capsulitis. A lot of things are there. Okay. So I hope your query will be solved, Raj. First, you need to find it out. What exactly the reason behind your shoulder pain? Then we have rheumatic arthritis. Is it genetic? Yes, you had answered that. Is it genetic? Yes, it is genetic. It is genetic, definitely. Okay, and just Raj. Okay. So now then we have okay. There's one more from Mr. Jasdeep Singh Sood. I have developed so-called trigger finger in both hands, thumb. Is it normal? Thumbs get stuck. What is the treatment? Currently, I am doing nothing about it. I am told it normally starts with fingers, but in my case, it thumbs. So I also have thyroxine and some medicine he is taking. I think so. Numbness again. I think this is going to relate with that. Yeah, it is. Trigger finger means you get a knot in your tendon. So there you get stuck over there. Tendon gets stuck. That is why trigger finger condition comes. So in that condition, if you overuse your thumb or activity like typing or whatever the activity you are doing, that has become overloaded on your thumb, and that creates a knot in your thumb. So what you have to do, you have to just do hot water fermentation, put some salt in that, and at least 4-5 days you do that hot water fermentation 3-4 times a day, and then take a gel ball. Okay. Gel ball, put it inside the hot water and do some squeezing exercises on that. Okay. Once you feel कि जो अटकना है वो बहुत hard नहीं है, soft हो गया है, then start with the mild stretching. Okay. And then start with the gripper exercises. These are all things he has to do. If it doesn't subside, then it is having some advanced stage में वो trigger finger गया है, then it need medical attention. So he has to then properly examine and where to see what we can do for that. Just like ultrasound है, laser, class 4 lasers है, वो सब से भी problem solve हो जाता है. Okay, so that means you're suggesting him to go for the hot water thing for the 3-4 days with a squeezing ball in that, and then if it does not subside, then they have to visit the physiotherapist. Yes. Next question is, I experience burning sensation or feeling in the sole. Reason is for age is 46. So what could be the reason behind that? Is she a burning sensation? Is she a diabetic? Is she diabetic? I have to ask that. I don't think so. She is diabetic. No, it's not mentioned here. Okay. No. She said. No, she is not diabetic. Yeah. She is not diabetic. Yes. So then again, burning sensation, then there is a major reason is if she is a deficient of vitamin B12. Vitamin B12. If she is not, if she is a vegetarian, then definitely there are chances for vitamin B deficiency. Then she has to go for the test. Vitamin B12 का test करके पता करो कि level क्या है अपने. अगर lower level है तो she has to start with the अपना supplement start करो. Second thing, she has to see for the over pressure point create हो रहा है क्या while standing or walking. तो she has to see उसके जो footwear है वो uniformly wear out हो रहा है या एक side से घिस रहे हैं या एक हो रहा है.
अगर वो भी हो रहा है तो then again that will cause a nerve impingement, and then she can have a numbness or tingling or burning sensation in the feet. Okay. In that condition, if it is mild, then again she has to do hot and cold water. Hot and cold, both. Yes, both simultaneously. Take a 2 pots. एक इसमें ठंडा पानी रखो, एक इसमें गर्म पानी रखो. गर्म पानी में पैर डुबा के रखो for 1 minute. Then निकाल के ठंडे पानी में पैर रखो for half a minute. 1:2 का रेशो होना चाहिए. 1 is cold, 2 is hot. Okay. गर्म That ज्यादा will होना help her चाहिए, out. कम होना चाहिए. तो ऐसा Okay. 10 to 15 टाइम्स रिपीट करो. और विटामिन B12 ले लो. और ये सब से अगर सॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो देन अगेन वी हैव टू एग्जामिन एंड देन सी व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट. कोई फूड प्रेशर्स वगैरह हो रहा है या फूड अलाइनमेंट या क्या हो रहा है, उसके वजह से. Right. I hope Asha ji, your query will be that solved. One more question we have here. My age is 65 from Pankaj Dulia. My age is 65. 4 months ago, I had a mild paralytic attack affecting my left side of the body. After hospitalization and medicine and physiotherapy, it has cured, but I still have the pain. Just one second. I still have the pain in the left shoulder. It is not going even after taking the medicine. Medication. Don't take the medication for that. Ask him to continue with the exercises, because once you get the paralysis attack, after recovery also you have to keep on doing the exercises for another 6 months to 1 year. 6 months to 1 year. Okay. 6 months to 1 year, he has to continue with the exercises, and that too under supervision. Every 15 days or a month, he has to visit the physio and learn the exercises, because every time exercise has to be changed. If he improves and the same exercise if he continue for 6 months, he's not going to get the relief. तो उनको every 15 days or 1 month में फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओ, असिस्ट करो अपने आप को, वो असिस्ट करेगा, एंड देन ही विल एडवाइज द न्यू एक्सरसाइजेस. तो उससे वो धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा परमानेंटली. बट डोंट टेक द मेडिसिन फॉर दैट. For the pain. मेडिसिन टेम्परेरी रिलीफ हो रहा है, हाँ एक्सेस पेन हो रहा है, अनबेरेबल है, ओनली दैट टाइम यू शुड टेक द पेन किलर. छोटे मोटे पेन के लिए नहीं लेना है, बिकॉज पेन किलर हैव अ वेरी ह्यूज साइड इफेक्ट्स, वेरी पोटेंट साइड इफेक्ट, लाइक पैरालिसिस, कैंसर, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, किडनी फेल्यूर, ये सब उसके साइड इफेक्ट्स है पेन किलर के. सिंपल पेन किलर्स के साइड इफेक्ट्स है. सो जस्ट थिंक बिफोर टेकिंग दैट. Okay. So my painkiller, we usually pop up the medicine like that, and anything is paining, so let's just pop a painkiller. But now I ask because you are suggesting that then we have to take care about how much. If you can manage, you can avoid, then it's okay. Okay, good. We have another question. My father, 82 years, from Nanditaji, have a severe nerve pain in foot. He is diabetic and orthoarthritis. That is, if he is a diabetic, then it's a diabetic neuropathy. In longer duration, diabetic nerves get damaged at the nerve ending. जहाँ पे फुट का जो है ना नर्व एंड्स रहते हैं ना, वहाँ पे शुगर डिपॉजिट होती है, देन वो नर्व को थोड़ा सा डैमेज कर देती है. इन दैट केस वी हैव टू असिस्ट द डैमेज परसेंटेज ऑफ डैमेज बाय डूइंग नर्व कंडक्शन टेस्ट. वो सब करके पता चलेगा कि कितना डैमेज है, उसके हिसाब से उनको हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं. विद द मेडिकेशंस भी हेवी मेडिकेशंस चलेगा, एंड देन पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थेरेपी आती है, देन ट्रांसक्यूटेनियस नर्व स्टिमुलेटर्स है. ये सब देके देन हम उनका कंडीशन डेफिनेटली इंप्रूव कर सकते हैं. क्योर तो नहीं कर सकते उसको, क्योंकि 82 ईयर्स है, काफी डैमेजेस हो गए होंगे, बट एटलीस्ट वी कैन गिव हिम रिलीफ टू 60-70% तक तो रिलीफ दे ही सकते हैं. Okay. So, okay, that can be done if the person is having, because the age is too much, 82 years. So both the things, we have to take the condition of the person. We have a question here: how to strengthen back muscles if you have scoliosis? If I pronounce it right. Scoliosis. Age 50 years, active job. He's Mr. Pankaj. No, he's just 1 second. It goes up. 1 second. Punita Party. How to strengthen back muscles if you have scoliosis. Age 50 years, active job. Now अभी जो आपका scoliosis हो गया वो फिक्स हो गया अभी scoliosis. So only thing you have to maintain that it should not worsen. जो curvature है वो increase नहीं होना चाहिए. So for that
You have to continue with the swimming exercise is the best for you. Swimming है, hanging exercise. तो आपको करते ही रहना पड़ेगा. अगर एक्सरसाइज करोगे तो कंडीशन आपका वर्स्ट होते रहेगा as the age progress. So keep on doing regular swimming exercises. That is the best exercise for you. Apart from that, you can go for the normal yoga exercises, whatever the suits you, which is not going to aggravate your pain or aggravate your condition. Definitely you can go for that. And उसके ऊपर एक particular exercises होती है जिस साइड आपका कर्व रहता है उसके अपोजिट आपको एक्सरसाइज ये नहीं करना है. जैसा कर्व ये साइड है आपका तो आपको स्ट्रेचिंग भी यही करना है. आपको ये साइड नहीं करना है. अगर वापस आप ये साइड स्ट्रेचिंग करोगे तो यू आर गोइंग टू एग्रीवेट द कर्व. तो आपको वो एक समझना है कि विच आर द गुड एक्सरसाइज फॉर मी एंड विच आर द बैड एक्सरसाइज फॉर मी. तो that means it's require a lot of clarification. Swimming exercise help him a lot. Attention and guidance. Okay. Does wearing a collar regularly help a person having a cervical pain? जो collar band जो पहनते हैं, collar नहीं पहनना चाहिए रेगुलर बेसिस पे. अगर if you are having a lot of pain, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, acute pain है, you are not able to tolerate that, in that condition you can wear it for 5 days, 10 days, 15 days, max 20 days. बस उसके बाद आपको छोड़ना है. Otherwise what happens, जब हम कॉलर पहनते हैं तो देन आपका मसल्स का जो एक्टिविटी है, ये वाली मसल्स की एक्टिविटी वो रिड्यूस कर देता है बाय गिविंग द सपोर्ट. तो सपोर्ट देने से अगर आप 20 दिन 25 दिन अगर आप उसको कंटिन्यू सपोर्ट दे रहे हो तो क्या होगा, मसल वीक होना शुरू होता है. देन वो हैबिट फॉर्मिंग हो जाती है. यू डिपेंड ऑन दैट. सो मैक्सिमम 2 वीक्स 3 वीक्स के अंदर वो कॉलर निकाल के फेंक दो. जहां आपको कंफर्टेबल लग रहा है डिसकंटिन्यू द कॉलर. नो नीड टू वियर इट फॉर लॉन्गर लाइक दैट. बहुत लोग तो ना कंफर्ट जोन में चले जाते हैं कि हाँ यार ये पहनने से मेरे काफी अच्छा लगता है, तो दे कीप ऑन वेयरिंग दैट. तो ये मत करो. Okay. I have a swelling over the bones of my legs between knees and the foot part. What is the reason? क्या हो सकता है? बहुत है ना. उसके रीजन तो बहुत ज्यादा है. बिकॉज फर्स्ट इज ओवरवेट, सेकंड इज योर मसल्स आर वीक. ये दो मेजर रीजन होते हैं. And inactivity, if you are having a sitting job or if you are not physically active, ये सब reason है swelling के लिए. अगर ये सब reason है तो solve the problem. जैसा अगर आप inactive हो या if you are sitting for long time, frequent breaks लो, चलते रहो थोड़ा थोड़ा, then be active. अगर आप ये सब हो, still swelling आ रही है तो elevate the foot while sleeping या बैठते वक्त पैर थोड़ा लंबा रखो. Stockings use करो कुछ दिन के लिए. That is going to solve your problem definitely. But basically activity is required. Yes, lose your weight and all those. हाँ, ये प्राइमरी अगर आप ये कर लेंगे तो डेफिनेटली उनका प्रॉब्लम अगर स्मॉलर इसमें है तो हो जाएगा. अगर नहीं है तो देन अगेन उनको ये करना पड़ेगा, कंसल्ट करना पड़ेगा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द स्वेलिंग. एंड देन इट्स लाइफस्टाइल स्वेलिंग है या इफ सिस्टमिक डिसीज प्रॉब्लम है, यानी इंटरनल बॉडी के इंटरनली कुछ अगर प्रॉब्लम होता है तो भी स्वेलिंग आती है, या अगर वो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व करना पड़ेगा. There is a question here. I'm 6 months pregnant, taking supplement medicines regularly. Recently feel different, a crackling sound around the pelvic area from bones or in the backbone. There also is in, and gynecologist said it will stay. Yes, वो रहेगा कुछ दिन के लिए, क्योंकि क्या होता है ना कि रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रेट होता है बॉडी में. तो रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रेट क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे बेबी का वेट बढ़ता है या उसकी ग्रोथ होती है तो अकोमोडेट उसको स्पेस लगती है. तो उसको अकोमोडेट करने के लिए आपके मसल्स को रिलैक्स करने के लिए बॉडी रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज करती है. अगर तो वो सिर्फ पेल्विक पे या एब्डोमेन मसल्स पे वर्क नहीं करेगा, होल बॉडी पे करेगा. तो लैक्सिटी आती है जॉइंट्स के अंदर. तो लैक्सिटी मीन्स हाइपर मोबिलिटी. हाइपर मोबिलिटी आने से देन यू माइट फील सम क्रैकिंग साउंड, बट इफ देयर इज नो पेन, फॉरगेट अबाउट दैट. वो अपने आप बाद में आफ्टर डिलीवरी निकल जाएगा. So you need to worry about. Enjoy the pregnancy. What could it be improved if that bones and muscles get separated? Okay, that's the same question. I think you had answered that. The last question till now. My daughter is 4 years old and she complains of pain in ankle area and foot. Her weight is approximate 20 kg.
एंकल एंड फुट असेसमेंट करना पड़ेगा उसमें, या तो अगेन जस्ट गिव अ प्रॉपर फुटवेयर, कंफर्टेबल फुटवेयर दे दो, हाँ कंफर्टेबल फुटवेयर दे दो उसको, एंड हॉट वाटर विद द सॉल्ट दो, उससे कम हो जाएगा पेन, एंड आस्क हर टू डू सम एक्सरसाइजेस जैसे एंकल टो मूवमेंट्स है, एंकल अप एंड डाउन रोटेशंस, देन स्ट्रेचिंग ऑफ द एंकल्स, ही इज स्टैंडिंग ऑन द हील्स एंड टोज, ये सब एक्सरसाइजेस को बोलो, तो उसमें अगर सॉल्व हो गया तो ठीक है, अदरवाइज वी हैव टू सी द असिस्ट द एंकल की क्यों पेन होता है, उसका अलाइनमेंट ठीक है या बायोमैकेनिकल इशू है या मसल स्ट्रेंथ या टाइटनेस का इशू है, वो पता चलेगा। Okay. पहले ये बेसिक करके देख लो, उससे निकल जाएगा, नहीं हुआ तो देन वी हैव टू सी। Right. Because we had talked about, can 11-year-old girl have muscle tightness, active athlete? Yes. 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 Okay. Definitely tightness रहता है, particular athlete, if she is an athlete then particular group में उसका tightness होगा, overall body या overall muscles tight नहीं रहता है। So we have to see that कि कौन सा मसल टाइट है एंड कौन सा मसल वीक है। बहुत बार होता है कि एक सर्टन मसल अगर हैमस्ट्रिंग एंड काफ, हैमस्ट्रिंग एंड quadriceps muscles की अगर बात करेंगे तो sometimes quadriceps muscles are tight and hamstring muscles are loose रहती है, वो टाइट नहीं होती, तो then again इस imbalance होता है इसके अंदर, तो then we have to see for that। That led to the knee pain also. हाँ, knee pain, back pain, that can lead to a back pain. Both and can knee be. pain, both Okay. can be. So अगर Okay. ऐसा है तो स्ट्रेचिंग वगैरह करके सॉल्व करो, हो जाएगा। इन केस नहीं हुआ, एंड देयर आर सर्टेन फेशिया रहता है अपने बॉडी पे, फेशिया भी होता है, बहुत बार मसल टाइट नहीं होती है, फेशिया टाइट होता है। फेशिया स्किन एंड मसल्स के बीच में वाइट एक मेश जैसा होता है, सो दैट इज आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर वो टाइट है तो देन वी हैव टू रिलीज दैट फेशिया, दैट इज कॉल्ड मायोफेशियल रिलीज। वो टेक्निक यूज करके उसको रिलीज करना पड़ता है, तो दैट विल सॉल्व द प्रॉब्लम। तो पहले तो नॉर्मल स्ट्रेचिंग्स करो, अगर उससे सॉल्व हो गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं हुआ तो देन विल सी फर्दर। So we had discussed a lot much today, a list of questions keep on going. So what I am going to summarize it from here. First of all, take care of your weight, be physical active. Then you need to take a break while continuing your job, whatever the course you are doing, you need to take a break, stretch and strength, So these three things need to be in the comparison together. That it will work out. How to find it out, where to use the ice pack and where to use the hot water pack. So that is that clarity we had got. And basically when the people are complaining about the neck pain, back pain, frozen shoulders, cervical arthritis, so everything, all the pains need to be treated. So that thing, because physiotherapy is the one section which I presume that it has always been taken for granted. Until unless you can't bear the pain, you can't go to the person, to the doctor. So if you have a pain, please go visit beforehand, rather than the thing situations go beyond your control. So anything, doctor, which I had left to summarize? Vitamin D, vitamin D, vitamin E. Vitamin D and vitamin E is very important. Yes, and foot care, footwear also you have to see for your footwears. That is also footwear. Footwear is very important. Soft footwear. With the soft footwear, with the foot condition, you can get a cervical pain. Okay, with the foot condition, cervical also get affected. Yeah, because I was in the teaching profession. I always suffer with the numbness of my hand. My hands get stuck. I'm not able to leave the chalk, leave the pen or the knife. I can't do that. So overstrain of the activities of the wrist and fingers. That is why it's create a pressure on the nerve which is passing through the wrist. So that is why this condition comes. That is called a trigger point, not trigger point. It is called tenosynovitis conditions. Okay. So there you have to use the splints, night splints. So initial stage में night splint use करने से problem solve हो जाएगा, and keep on stretching your wrist. अगर wrist proper stretch करते रहेंगे, release करते रहेंगे pressure, तो problem solve हो जाएगा. So I'm going to share a screen, a PPT shared by the doctor over here. So I think we all should. Just 1 second. Sorry. Yeah, I think this is the clarity over here as the neutral posture, what it should be when you're sitting in the front of the computer.
Yeah, these are all the posture you can adopt while working. While working, right? This is the basic neutral position, which we said that this is an ideal position to sit, but there is no ideal thing. Ideal thing is to Right. change the posture. Keep on changing your posture frequently. Hmm. Use the gadgets like अपना mobile है उसके अंदर reminder लगा दो every 1 hour. Hmm. That will remind you with the take a break or do some stretches. Office stretches होते हैं बोलते हैं उसको कि you can do some stretches so that will solve your problem. इसके बाद next दूसरा एक ये next slide is Back relief. back relief. Yeah. So we have the lower body relief. Yeah, you can slightly lean ahead. ठीक है, but not you can use it occasionally, but not for longer duration. ठीक है, 10 to 20% you can lean back for 10-15 minutes के लिए, that's okay. But not for a 1 hour अगर आप back lean करके बैठोगे तो आपका back pain हो जाएगा. But again, for certain conditions, you should not sit like this. Okay. Then standing posture. If you are not able to leave your desk, then stand and work. खड़े होके काम करो. For again 10-15 minutes के लिए खड़े होके करो, फिर बैठ जाओ. That will be the better and alternative prolonged sitting. Even I'm seeing this the posture there, one foot is above. They just kept somewhere, you know, on the bit high position. Yeah, this is foot rest. So that Okay. आप कंटिन्यू खड़े रहोगे तो दोनों फुट फटीग हो जाएंगे. अगर एक पैर अगर आप फुट रेस्ट पे रख रहे हो तो एक प्रेशर आता है, देन वो फटीग होने के बाद दूसरा पैर ये फुट रेस्ट पे रखो, उसको रेस्ट मिलता है. ये पैर ये करो तो इन दैट वे यू कैन स्टैंड फॉर लॉन्गर टाइम. अदरवाइज दोनों पैर एक इसमें 15 मिनट से दोनों फटीग हो गए तो उसके बाद यू हैव टू सिट और यू विल गेट द पेन. Then this was a chair you had suggested. Yeah, this is ideal chair that it should have a height adjustability होनी चाहिए. Then sitting जो होता है, जो सीट पे बैठते हैं, that should also move up and down. to आगे पीछे होना चाहिए. Plus उसका जो edge है, it should be rounded one. It should not be a straight or edge ये नहीं होनी चाहिए. It should be a rounded one so that it will not create a pressure on your thighs. There's something we are missing nowadays because we're working from home, so we don't have the infrastructure like what we have in our offices. That's why we don't complain while working at office, and the scenario change when you work from home because we do not have the right infrastructure to sit and work. Yes. So definitely then you should take more frequent breaks when you are working, or change the posture, just like standing or sitting or changing the lean back or backward. Then even you should have a proper arm rest. बहुत बार मैं देखा है chairs में arm rest ही नहीं देते, वो निकाल देते हैं. नहीं होती है. नहीं निकाल देते. And जैसे वो निकालेगी then their hands जो है वो hang होते हैं नीचे. Right. Then problems start with the neck pain and wrist pain, ये सब start होता है because pressure comes on the wrist. Wrist बहुत ज़्यादा hard surface पे आप forcefully hold करके रखते हो hand को maintain करने के लिए. So then it start getting you. Yeah, this is something which I can relate to. Yeah. I think everyone can relate to because they're working on the laptop or on the iPad. So our hand position is totally, check it out guys, which one is correct for you. I usually keep it in this way. The second one, this one, I kept my hands in this way, awkward position. So we need to be careful while putting our hands. That's why it creates the numbness. If you have a habit of keeping like this, then you can keep on the soft pad so that pressure comes. Soft pad. So it will reduce the pressure. Okay. If your habit and you are not able to change the habit, then you can use the even silicone pads are also there, or air cushions also there. You can do that. Okay, these are the stretching exercises. Yes, these are all the stretches. You can do it in the sitting and standing position, and it's very simple. And anywhere you can do that. Whenever you get the time, just do that. That will properly release your all the muscle which are going to be strained when you are working for Actually, we should take a printout of this and stuck in the front of our workplace wherever we are working right now. Yeah, so to keep us reminding that we have to do the stretching in this way. Correct. Again, the same thing what you had said. Yes. This is again stretches to release neck and the shoulder pain at your desk. Yes. Okay. These are the different activities, stretches you can do that. Require, right? Yes, please. So perfect posture while working on a computer.
Ideally, it should be particular. Ideally, it should be like this. But ideal thing is keep on changing the posture. That is ideal thing. Keep on changing the posture. Take a frequent breaks, because in this position also people will not sit for more than 1 hour or 2 hours. Right. And this is interesting. Look at your posture. So, आपका कौन सा posture है इसमें से you can see that. Correct posture, then hollow back, flat back, and this is yeah. Yeah. Okay. So again, healthy, read books, love yourself, don't anger, love your work, meditate every day, have enough sleep, always forgive. This is most important, always forgive. Help others. So now your turn. What should be the 10th point according to you? Thank you.